Driven by liberalization, globalization and the digital revolution, India's financial sector has seen great and exciting changes over the past decade. Today, this multifaceted industry offers a variety of positions catering to different skills and interests. Moreover, corporate finance and financial services have multiple sub-industries that encompass niche opportunities. In such a situation, the key to landing a successful career lies in researching and locating and landing a specialization which has the greatest compatibility with your personal skills and interests. And to help us navigate this jungle of complexities, we have with us today Amit Kumar Jaggia, FCA. Amit is a practicing CA specializing in chartered accountancy, audit and taxation. Licentiate company secretary, he has done his CIMA, CMA, ACCA and a whole string of qualifications, all alphabetical. Before starting his own practice, Amit worked with PwC for 5 years, where he advised and represented several MNCs on tax and regulatory matters. Passionate about training and development, Amit's been teaching accountancy, taxation and cost and management accounting to faculty as well as students for over a decade now. As a senior faculty, he's trained over 9,000 students and professionals at international professional institutes like CIMA, Chartered Institute of Management Accounting, London, ACCA, UK, ICSI, and IICA, Indian Institute of Corporate Affairs, which comes under the Ministry of Corporate Affairs, as well as at B schools. Welcome to Career Cafe, Amit. What a pleasure, really. Now, before the calls start coming in, I'm going to pick your brains. So tell me, ये जो सारे qualifications हैं, एक typical student जब पास होके निकलता है 12वीं करके, तो उसको समझ नहीं आती है कि मैं CA करूं, कि CS करूं, कि CWA जो अब CMA हो गया है, या CIMA जहां आप पढ़ा रहे हैं, तो ये करें, अभी करें कि बाद में करें. So you are going to help us navigate through this jungle. So tell me, what is the earliest that you can enroll for these certification programs? Yes, ma'am. सबसे पहले जो स्टूडेंट है 10th के बाद ही ये क्वालिफिकेशन स्टार्ट कर सकता है. Okay. Like CA can be started after 10th class, but exams can be given only after 12th. After giving the 12th exam, basically. He need to submit the passing certificate later on, but he can appear, he can start preparing after 10th class, and then he can appear for the exam just after giving 12th board exam. And तो ये जो CPT का करिकुलम होता है, वो जो क्लास 11 और 12 में जो कॉमर्स का स्टूडेंट पढ़ता है, उसमें तालमेल होती है क्या? बिल्कुल मैम, बहुत ज्यादा तालमेल होता है. इनफैक्ट जो 11th 12th है, वो पूरा CPT के सिलेबस में कवर हो जाता है. So if student has done 11th 12th in commerce stream, then he or she will be able to get an edge over people who have not done commerce, like 12th from commerce. Maths इसमें कितना important है? Yes, people are afraid of maths in CA, but it is I would say it is just one paper of maths, and let me tell you that maths is again some bit of like what student studies in 12th class, and also there is bit of financial mathematics also, which has then statistics also in this. It is too vast a syllabus, but this is student need to remember that they will apply this particular knowledge they will study at this level at the next level also, that is IPCC level, as well as at the final level also. But most of the students do not join CA just because of this hurdle. If they are afraid of maths, then they do not join and they join some other qualification. But maths is just at this level, and if now this is across these 4 certifications, like CA में मैथ्स और CS में भी उतना मैथ्स? CS में मैथ्स नहीं है, फर्स्ट लेवल पे भी नहीं है और बाद में भी नहीं है. CW में भी मैथ्स है फर्स्ट लेवल पे ही. बाकी वो मैथ्स जो है जस्ट एक आपको बैकग्राउंड के लिए यू शुड नो अबाउट फाइनेंशियल मैथमेटिक्स. Although there is differentiation, integration, integral calculus also, still it is not at the final or IPCC level.
तो और अगर एक स्टूडेंट शुरू से ही डिसाइड करता है कि मुझे फाइनेंस में जाना है तो मैं इनमें से कोई भी एक सर्टिफिकेशन करूंगा, तो क्या वो रेगुलर ग्रेजुएशन के साथ साथ ये कर सकता है कि उसको छोड़ना पड़ेगा अपना रेगुलर कोर्स? डेफिनेटली मैम, रेगुलर ग्रेजुएशन के साथ ये कोर्सेज करे जा सकते हैं एंड मोस्ट ऑफ द पीपल डू इट विद रेगुलर ग्रेजुएशन ओनली, बट कुछ क्वालिफिकेशन में एक हर्डल है दैट सीए में है। यस, सीए में है ये हर्डल कि आपको अगर ग्रेजुएशन आपने करा एंड रेगुलर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, यू क्लियर एट सर्टेन स्टेज लाइक आईपीसीसी तक अगर आप क्लियर कर लेते हैं, देन you will have to choose between the two. Either you can do training after doing IPCC, or you should choose the other route, that is you complete your graduation and then leave CA for some time and then complete take it up your as soon as you've completed your graduation. But that takes that route takes around 6 to 7 years if student clears everything in first attempt. In the first attempt. Yes. तो अच्छा ही है कि साथ साथ में हो जाए. But we have seen most of the students what they do, they choose the other route also. They get admission in best of the colleges and still they pursue professional qualification. So even if they have got 95% or 97%, you would have heard about that girl, all India topper for 12th in CBSE exam. She has chosen CA over regular graduation in spite of getting 98 or maybe 99%. So no, now that is a personal choice. But most of the people do this. Most of the people do this. We have seen some of our students who take counseling from us and have left the regular college and joined C. ये भी तो कर सकते हैं ना कि आप थोड़ा कॉलेज लाइफ एंजॉय कर लें जब तक आप आईपीसीसी क्लियर करते हैं, उसके बाद यू कैन शिफ्ट टू द स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग या कॉरेस्पॉन्डेंस. बहुत हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो ये प्रोविजन है कि आप रेगुलर कोर्स से कॉरेस्पॉन्डेंस में एनरोल हो सकते हैं, तो वो कर लें. सो यू गेट अ टेस्ट ऑफ कॉलेज एंड देन यू कैन डू द रेस्ट थ्रू. बिल्कुल मैम, बट ये पहले पॉसिबल आसानी से था, लेकिन अब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया. रीजन बीइंग कि अब जब से सेमेस्टर सिस्टम आया है, स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज एंड इवन पीपल आर कंफ्यूज्ड एट दिल्ली यूनिवर्सिटी. स्टाफ इज कंफ्यूज्ड दैट व्हेन दे विल कंप्लीट अ पर्टिकुलर सेमेस्टर, सो हाउ दे विल गेट एनरोल इनटू द डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम इन विच ईयर. वो उनको ये डर रहता है कि जो रेगुलर कर रहे होते हैं कि उनको स्टार्टिंग से करना पड़ेगा. सो दैट्स व्हाई दे डोंट लीव देन रेगुलर. और शहरों में तो ये है ना कि मॉर्निंग क्लासेस आप कर सकते हैं ग्रेजुएशन के, सुबह 7 साढ़े 7 बजे शुरू हो जाते हैं, तो 10 बजे तक आपकी कॉलेज खत्म. उसके बाद यू कैन गो फॉर योर आर्टिकलशिप. ये कलकत्ता में, बॉम्बे में तो ये है उपलब्ध, हमारे यहाँ नहीं है. तो जहाँ नहीं है वहाँ यू विल हैव टू टेक अ डिसीजन. एंड अमित, वी हैव अ कॉलर waiting, Rajesh Kumar from Delhi. Welcome to Career Cafe. Hello. हाँ जी, बिटिया ने अभी बीकॉम किया है, तो अभी देखना चाह रही है कि क्या करूँ आगे. उसने अभी कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं किया है. हाँ, बीकॉम कर लिया, उसके बाद नहीं कोई सर्टिफिकेशन. अच्छा, उसके बाद तो अमित, सबसे पहले जैसे हमने शुरुआत में ही बताया, इनकी बिटिया को ये तय करना होगा ना कि ये जो फाइनेंस इतनी वास्ट फील्ड है, तो उसमें कौन सा सर्टिफिकेशन परस्यू करे. तो इसको डिसाइड करने के लिए स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? ये प्रोग्राम तो सुनना ही चाहिए, लेकिन इसके अलावा यस, बेसिकली सबसे पहले स्टूडेंट को अपना एप्टीट्यूड जानना चाहिए कि वो किस कोर्स को आराम से कर सकते हैं. बिकॉज बहुत बार हम लोग ये देखते हैं कि लोग सीए ज्वाइन कर लेते हैं या सीएस ज्वाइन कर लेते हैं without knowing anything about these. They do not take career counseling for these courses and they just join because everybody else is joining. So there is a herd mentality, भेड़चाल है जिसकी वजह से ज्वाइन कर लेते हैं एंड फिर उतने ही जल्दी लोग छोड़ भी देते हैं. और इसलिए तो ये होता है ना कि हम जब कहते हैं कि पास परसेंटेज 5% है या 3% है या 0.5% है, बिकॉज ऑफ दिस धाड़े के धाड़े ज्वाइन कर लेते हैं विदाउट रियली going into the merits and demerits, and therefore they're not able to clear.
जैसे इनका जो सवाल है बिल्कुल जायज सवाल है। तो बीकॉम के बाद सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपका इंटरेस्ट किन सब्जेक्ट्स में ज्यादा है। लाइक आपका अकाउंटिंग में ज्यादा है या आपका लॉ में, आप थ्योरी सब्जेक्ट्स में स्ट्रांग हैं, आप ऑडिट, आपने ग्रेजुएशन बीकॉम करा है तो आपने ऑडिट भी पढ़ा है, टैक्सेशन भी पढ़ा है। अब तक आपको ये पता चलना चाहिए कि आपका किस एरिया में इंटरेस्ट है। देन अकॉर्डिंगली यू कैन चूज योर लाइन। लाइक इफ आई टॉक अबाउट इंडियन क्वालिफिकेशन, अगर ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने स्टार्ट करना है तो सीए इज अ चॉइस। इफ स्टूडेंट अगर अकाउंट्स में या अगर कॉस्टिंग में या अगर टैक्सेशन में, ऑडिट में, अगर इनमें से प्रैक्टिस करना चाहता है या जॉब करना चाहते हैं अगर आगे, तो सीए कैन बी सिलेक्टेड। अगर उनका इंटरेस्ट लॉ में है, अगर उनको अभी लॉ पढ़ा है और लॉ इंटरेस्टिंग लगता है, देन सीएस विल बी द एप्रोप्रिएट कोर्स एंड अलोंग विद दैट इवन एलएलबी। मोस्ट ऑफ द पीपल, तो ये तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन, बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन होता है। अच्छा। जो लोग ये करते हैं सीएस प्लस एलएलबी with choice, with knowing what they are doing. You must know what you are doing. Yeah. And it is all about corporate law. So the legal component is very significant in the course. Yes, ma'am. Absolutely. And then cost accountancy is also selected. People who want to make their careers in management accounting. And then they have these Indian options available. They have then international options also like available. CIMA. Yes, CIMA. Etc. CIMA is an authority in management accounting. So it's a combination of, you can say, finance and business knowledge. So whatever is taught in CA or whatever is taught in MBA, so we study in CIMA. So similarly CPA, CFA or other international recognitions. And you know, today all this information is so widely available on the net. So if you were to read it with a little attention, Bhai Sahab, your daughter will be very, and खास करके क्योंकि उन्होंने already become कर रखी है, so she has the mental capability to be able to take this decision. So best of luck. We'll take a short break here, but when we return, we'll continue to look at the outlook and prospects in this field and also take your queries. So stay right there. Welcome back to Career Cafe. We're looking at careers in finance, and with us is Amit Kumar Jagia, FCA. So Amit, before other callers come in, I'll squeeze in all my questions. Number one, ये जो certifications है, CA, CS, CMA, CIMA वगैरह जो भी है, इनके बाद गवर्नमेंट में जॉब्स मिल सकते हैं क्या? Yes, ma'am. Definitely. लोगों को ये कम आइडिया होता है, but these have prospects in government jobs also. Particularly, special focus is on PSUs. PSUs hire CAs as well as company secretary, cost accountant, and campus interviews as well. They hire at a time 250 to 300 chartered accountants or these professionals in one go. So, no, you mean all CSU hires in one go, or yes. CSUs together hire in one? No, one PSU hires. Will hire so many? Yes. So, likes of NTPC, SAIL, Power Finance Corporation. So, these kind of companies do hire CAs, and you can see the employment newspaper comes in, and आपको देखने को मिलेगा जो भी PSUs हैं, अगर finance में requirement है, they will write CA, CS or CWA. So for profiles like director also, they need experienced CAs or cost accountants. There is a whole lot of recognition in government jobs. Oh, yes. So that's a big avenue. And so with CS, no? Yes. So with CS, absolutely. And also people go for the IAS, IAS, IRS, IFS, UPSC examination. So that is again a prospect in government job for these. And they are able to crack easily because they have done so tough qualifications. Right, and I think even those who have done CMA would, even in the Indian Army, the defense में भी इनकी requirement होती है ना? हर जगह फाइनेंस हर जगह रिक्वायर्ड है. आपको घर चलाने के लिए भी चाहिए और ऑफिस चलाने के लिए भी चाहिए. And on that note, we have yet another caller, Pradeep from Bokaro, Jharkhand. Welcome to Career Cafe. Hello. Good evening, sir. Good evening. मेरा सवाल है कि सर ग्रेजुएशन के बाद SSC की किस तरह प्रिपरेशन की जा सकती है? How to the SSC exams, CGL exams? Which exams? SSC. SSC?
Staff Yes. selection. The Staff Selection Commission exams. Yes, yes, ma'am. नहीं, this is the Staff Selection Commission exams के लिए ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जाम के लिए कुछ जगह जैसे जहाँ ग्रेजुएशन का रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पे सीए ये और भी सीडब्ल्यू कंसीडर करे it is जाते हैं considered equivalent to graduation. बैंक एग्जाम दे आर Yes. कंसिडर्ड इक्विवेलेंट। और जो इनका क्वेश्चन है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए, आपके पास बहुत सारे रूट्स हैं अवेलेबल जिसके थ्रू आप स्टडी करते हैं। लाइक आपके पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है एंड देन you have the classes available. Even we have seen government conducts these classes, these institute conduct classes. So student can study there and then he or she can clear those exams, SSC exams. नहीं तो अगर कौन से इंस्टीट्यूट्स कंडक्ट करते हैं क्लासेस? जैसे I have seen even like there are certain non-profit organizations which conduct classes for SSC and obviously there are private organizations Of as course. well which provide SSC And study coaching. material is Yes. available. There's so Yes, much yes. of it available in student bookstores and magazines and things. Online भी बहुत मिल जाएंगे Yes. आपको previous year's question papers. So I think yes, it certainly is counted as a qualification, full-fledged bachelor's degree qualification. Yes. So tell me, ये जो certifications करते हैं, what kind of salaries? क्योंकि आजकल बच्चे सबसे पहला सवाल यही पूछेंगे ना कि इसके बाद पे स्केल या क्या होगा, तो इसका क्या जवाब? Okay, let me tell you first the good part and then the bad part. Good part is that we have seen in campus placements that these professionals are able to command package as high as 70 to 80 lakhs also. But that's in exceptional cases, no? But these are, we have to know that these are also freshers. They have just completed their articleship or the training required in these qualifications and they are able to command these much packages. On the other side, on the lower side, we have seen that people even get 10,000, 15,000 also per month. And you can say 1,50,000 as package. But there are certain problems with these people who are getting 10,000 or 15,000. They basically do not focus too much on the practical training aspect, which is the backbone of these qualification. If they will compromise on the practical training aspect and they just clear their exams and do not do practical training or Do these do it, dummies and all that, yes. do these lightly. So that will be actually hit them later on once they qualify the exam. Then on average, professional is earning CA on an average is earning around 35,000, between 35,000 to 50,000. At start. Yes, At start. Yes. Which is a good beginning. Yeah, good beginning. I mean, you would do Considering, that yeah. with a medium type of MBA even. Yes. Hmm? Yes. ma'am. We have a caller, so we'll take her first. Suhela from Tamil Nadu. Welcome to Career Cafe, Suhela. Hello, madam. Hi. My daughter got an appointment as a probationary officer in PSU Bank. Basically, she is an engineering graduate. Okay. So, how can she improve herself in the field of finance? Now Super. she is appointed as probationary officer. Wonderful, So, wonderful. So hi. congratulations on that. And Amit will madam. give you the answer to the second part. I'll see in the TV. Thank you, madam. As I understood the question, her question is that She's got, yeah, she's and- been appointed as a probationary officer. So probationary how does she officer. enhance Yeah, this? and she is from engineering background and like how to Enhance excel in it, yes. finance. So basically, we get a lot of people who join these qualifications also. Now, her question was entirely different, but still, I would be able to relate this. Let me tell you, people who are from engineering background are able to do very well in finance. The reason is that science students always go for the logic. Yes, the logical, analytical problem yes, solving. Yes. All of And that. why this thing is happening. And this is what professional qualification in finance teach you. No, so which qualification should she be pursuing? She can pursue any of Since these she is in the qualifications. bank. Yeah, she is in a bank, then I would suggest like CA, or if she doesn't have time to do CA or CMA, then she can go for international qualifications like CIMA, ACCA. These can be done much earlier and these focuses on practical application part. And
in any case, her experience in bank will also be counted as relevant practical experience for these qualification. So she can plan for these qualification and complete it within one and a half year. So she can do time. a CIMA, she can do a CMA, Yes. or she can CA do also, CA, but that might be a little tough. CA requires 3 years Yes, of practical experience, which she will not be able yeah. to. Absolutely. So I think either of these would be very good. We have yet another caller. Welcome to Career Cafe. From Madhya Pradesh. Welcome to Career Cafe. Shravan Kumar. Hello. Hello. जी मैडम, मैं बोल रहा था कि जी हाँ हाँ मैडम, हाँ बोलिए. मैं पवन कुमार पवार हाँ बोल रहा पवन हूँ। जी बोलिए. जी मैडम, मैं बोल रहा था बीकॉम करने के बाद मैं आगे पढ़ाई करना चाहता हूँ, उसके लिए सरकार से वित्तीय सहायता मिल पाएगी? स्टाइपेंड, लोन, ये कोर्सेज के लिए मिलती है क्या अमित? नॉर्मली इन कोर्सेज की जो कॉस्ट है वो बहुत कम होती है, नॉमिनल बहुत होती नॉमिनल है. सी होती है और आपको एक बारी में नहीं देना होता. बिल्कुल, जैसे आप एग्जाम हाँ क्लियर जी, करते जैसे हैं. आप एग्जाम क्लियर करते हैं हर एक लेवल पे आपको अगर 3-4 लेवल हैं, अगर हम इंडियन क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो लगभग 6-7,000 10,000 एट द मैक्सिमम ये आपको पे करना होता है. स्टिल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, ये आपको इन इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाके आप इंस्टीट्यूट चेक के कर आप सकते हैं. अगर सपोज आप सीए कर रहे हैं तो आप अगर चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के वेबसाइट पे देखेंगे ना तो फंडिंग के ऑप्शंस उसमें लिखे लिस्टेड होंगे. सिमिलरली कंपनी सेक्रेटरी, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो इन पे आपको मिल जाएगा. आप अपने लोकल बैंक से भी बात कर सकते हैं कि अगर स्टडी लोन. लेकिन द गुड, जो सबसे बढ़िया बात है इन सर्टिफिकेशंस की, एक तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस है, ऊपर से ये बहुत ही सस्ते हैं. आपको हाँ पैसा लगता है अगर आपको प्राइवेट कोचिंग चाहिए, और प्राइवेट कोचिंग मैंडेटरी नहीं होती ना. प्राइवेट कोचिंग मैंडेटरी नहीं है. इनफैक्ट स्टूडेंट जो इंस्टीट्यूट से स्टडी कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट्स भी ओरल कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड और करते हैं. यूट्यूब पे सारे Yes, आप पढ़ाते हैं इन बिल्कुल, मैं इंस्टीट्यूट. पढ़ाता हूँ और आज भी मैं एक सेशन लेके ही आ रहा हूँ, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं. ये एक माइंडसेट बन गया है कि प्राइवेट कोचिंग जरूरी है, वो एक भेड़चाल है. Otherwise, these courses can be done at a very low cost. These require hard work, too much hard work and confidence. And basically, I always say for clearing these papers, we need hard work, confidence, and luck. So these three things are required, not the money aspect. Not the money aspect. So fantastic. पर एक चीज मुझे और बताइए Yes, ma'am, कि sure. क्योंकि इसमें परसेंटेज इतना कम होता है, हाँ पता जी. नहीं क्यों, क्योंकि वो रेगुलेट करते हैं ना कि जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो रिलीज करते हैं मार्केट में कि उनका डंका बना रहे, हाँ जी. है ना. तो वो तो ठीक है. लेकिन आपको एज अ स्टूडेंट, इफ यू वांट टू हेज योर बेट्स, then does it make sense to pursue a parallel postgraduate qualification so that just in case you don't make it, you're not high and dry? Does that make sense? आप कर सकते हो परस्यू, आप कोई और क्वालिफिकेशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं. जो भी आप करेंगे it will basically give you an edge. However, it is not required because these qualification in itself are considered as post graduation. That's true. Yeah, that's post true. graduation नहीं, for पर the अगर purpose of नहीं field. हुआ तो Okay, नहीं अच्छा, हुआ पार्ट तो क्वालिफाई हाँ जी. किया तो फिर पार्ट क्वालिफाइड के लिए भी अब इंस्टीट्यूट्स ने एक ऑप्शन अवेलेबल कर दिया बिकॉज इंडस्ट्री डिमांड्स पार्ट क्वालिफाइड एज वेल. क्योंकि इंडस्ट्री में एक उनको लगता है कि एक सीए को या सीएस को हायर करना काफी कॉस्टली पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाई दे आर फोकसिंग, दे वांट लाइक ट्रेन्ड अकाउंटेंट्स बट नॉट सीएस और सीएमएस. So they want to hire at maybe 15-20,000 per month package. So for that, CA Institute as well as CWA Institute have accounting technician course. So this is basically for those people who have completed their say IPCC level or the intermediate level and they are not able to clear their final paper. So it is a window for them, and it is for those candidates also who do not have time
to study for the full course, and after one stage they can directly apply for accounting technician course. They have to give only some papers and they become accounting technician, and then they have scope in industry. And you know, we are really running out of time, but the other thing is that if you're looking at working abroad, in that case then you go for the foreign qualifications like CIMA or ACCA, which are globally certified. And the other thing is, I believe talking to you, I learned that if you have done the Indian qualifications and then you want to do those foreign qualifications, you only need to give additional papers. So it's not as if you have to do it from scratch. In fact, there are memorandum of understanding or mutual recognition agreements with all of these institutes, and you have to give only certain papers. For an example, there is an MOU between CW Institute and CIMA, as per which cost accountants members are required to give only one paper out of 17 papers of the qualification. They recognize our qualification. Yeah, so that's wonderful, wonderful. So on that very, very happy note, we'll wrap up today's show here. Amit, thank you so much. Really, I mean, your finance is such a jungle for everybody, including me. आपने कितनी सरलता से सारा आंसर किया. Thank you very, very much. And next week on Career Cafe, we'll look at yet another super career. And before that, best of luck, take care, and see you again.